Hello everyone. In this video I am going to discuss some of the subjective type of questions that you can expect in your paper 2 and paper 3. These are just types of questions that you can expect in your examinations. The actual questions could be like them, so you have to prepare accordingly. So let's see. So you can get questions like discuss some of the contributions of Rabbin Nattegor in literature. So you have to discuss Tagore as a writer, as a literary writer. तो आपको ये बताना होगा he is known for his poetry, he is known for novels and writing essays, short stories, travelogues, dramas and all such things. But most basically he is known for his highly regarded short stories. उसमें भी he is credited with originating the Bengali language version of the genre. He is very well known for his great Bengali short stories. So and he wrote about day-to-day common people in his stories. So that is something unique about him. He's known for his best works such as all these that are mentioned here, and Gitanjali, for which he won the Nobel Prize. So you have to know about these things, and such questions you can expect. Or you can have a question like write a brief note on the various elements of the short story. So इसमें आपको प्लॉट की क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कशन करना होगा. वाई इज़ प्लॉट इंपॉर्टेंट इन स्टोरीज? ऑफ कोर्स इफ देयर विल बी no plot, the story will not be interesting, or it will not find its way. So some sort of a plot is necessary, even if it is minimal plot. फिर what role does characterization play? Characters बिल्कुल important है. Characters के बिना story proceed नहीं करेगी. Write about some of the narrative techniques that the writers used. कौन सी narrative techniques writers use करते हैं? Flashbacks हैं, foreboding है, और whatever revelatory techniques, जो भी आपको methods बताए गए हैं literature में, वो आप इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो वो यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स, राइटिंग टेक्निक्स. राइट अबाउट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो पहले एक्सपोजिशन होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टोरी को, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें कोई ना कोई इशू होगा जिसके अराउंड वो स्टोरी बेस होगी, जिस वजह से राइजिंग एक्शन होगा, उसी पे आगे इवेंट्स बढ़ेंगे, एंड देन इट विल रीच क्लाइमैक्स. एक टर्निंग पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर डिनूमा, उसके बाद धीरे धीरे एक्शन जो है वो अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ पहुंचेगा. तो यू हैव टू डिस्कस दैट. देन राइट अ नोट ऑन द थीम्स ऑफ ओ हेनरीज द लास्ट लीफ. ऐसे किसी के भी थीम्स पे आपको आ सकता है. मेजर थीम्स स्टोरीज़ की पता होनी चाहिए. सच एज द लास्ट लीफ की थीम्स क्या हैं? वैल्यू ऑफ लाइफ. लाइफ इज़ सो प्रेशियस. एन आर्टिस्ट शोज़ यू दैट लाइफ इज़ सो प्रेशियस. होप शुड नेवर बी लॉस. तो उसमें जो आर्टिस्ट है वो वही कॉन्स्टेंटली शो करने की कोशिश करता है कि यू शुड बी स्टिकिंग टू दैट लास्ट लीफ, स्टिकिंग टू दैट लास्ट होप इन योर लाइफ, एंड दैट शुड नेवर बी लॉस्ट. स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, उसमें वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देता है, एंड इवेंचुअली ही डाइज वाइल द वुमन रिकवर्स. So that is why that is the main theme of the story. And the significance of art, of course, because of art, because of drawing of that leaf, that woman is able to gain the willpower to survive. So basically themes को ही discuss करना है. ऐसा किसी भी story में आ सकता है thematic question. Write a critical appreciation of Anton Chekhov's The Bet, or even the such a question like justify the title of Chekhov's The Bet. तो दोनों ही तरह के questions हो सकते हैं. तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में यू मेक एन एनालिसिस ऑफ मेजर थीम्स, वो तो करना ही है. यू डिस्कस द कैरेक्टर्स. जो भी लॉयर का कैरेक्टर है वो भी डिस्कस करना है. इस तरह के और जो भी क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे, उसमें जो भी कैरेक्टर्स हों स्टोरी में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हों, तो उनका आपको कैरेक्टर ज़रूर डिस्कस करना है. तो इसमें कैरेक्टराइजेशन डिस्कस करना है. देन रोल ऑफ द प्लॉट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इट डिस्कसेस बेसिकली तो मिनिमल प्लॉट होता है चेकर्स की स्टोरी में. बेसिकली यू हैव अ वेरी माइन्यूट रोल ऑफ द प्लॉट बिकॉज इट इज़ अबाउट इशूज़ ऑफ लाइफ. सो इसमें क्या है, द इशू इज़ बेसिकली आइसोलेशन, और आइसोलेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Is it advisable, a life in isolation? Is it doable? That is what the bet is all about. All right. So that is what happens between the lawyer and the banker, and so you have to discuss that. And the writing style, that he uses such kind of words which are objective and all that. Then such questions you can get like write a character sketch of Madame Loisel in The Diamond Necklace, or write a character sketch of Nambi in Under the Banyan Tree,
or write a thematic analysis of Anita Desai's Games at Twilight, or write a note on R.K. Narayan as a short story writer. Any of these questions you can get. So basically themes को discuss करना है, characters को prepare करना है, और ये basic issues जो हैं, और plot कभी कभार एक question हो सकता है, you have to prepare that as well. Then you can get a basic question in paper 3 like what is an autobiography, give a few examples. So you have to describe the term autobiography, what does it mean, फिर significance क्या है, writer अपनी personal experiences, अपनी life के personal feelings share करता है, उससे अपने अपने जो emotions हैं share करता है, उससे कोई एक general motivation दूसरों के लिए life में जो हो सकता है वो share करता है. So that is all significance. Then writing styles, किस तरह से राइटिंग स्टाइल्स हो सकती हैं. एक हो सकता है अपनी फीलिंग्स को सब्जेक्टिव वे में शेयर करना, दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्टिव नरेशन करना, फिर इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. इट कैन स्टेट सम जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर, सो ऑल दैट. फिर एग्जाम्पल्स में यू कैन गिव वेरी फेमस एग्जाम्पल्स लाइक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, विच tells about the experience of a young Jewish girl suffering under the Nazi rule of Adolf Hitler. So that is a very popular work in literature. Then the story of my experiments with truth by Mahatma Gandhi, that is also a very important work. So you can give such examples or even other examples. Then write a note on Francis Bacon's writing style that I have already discussed, or Francis Bacon as an essayist. Then also you have to discuss his writing style, his short pithy statements, his aphoristic writing style, where he uses short statements which are witty, which are full of wisdom, which are like universal truths basically. So his expression of general truths and wisdom, his objectivity, his objective narration, that is also what you have to discuss. Then write a note on humor and pathos in Lamb's Dream Children. This is a very favorite question on this essay, so that can also be there. A short explanation of the title you'll have to give, a discussion of the characters you might need to do, because obviously the title itself says Dream Children, so you might need to justify the title. ये भी हो सकता है question. Justify the title Dream Children, so because those children are dreams and those children are what he dreams for, तो वो सब discussion आपको करना है. Theme of nostalgia, he wishes that he would be in his past. His past was so good, he was so happy in his grandmother's house with his brother, and he was so delighted to be there. So that is the humor that is there in the story. You have to discuss that. And the grief, the pathos, because now his present is very sad and dismal. So you have to do an evaluation of that theme, and then explanation of the use of humor and pathos as literary devices in the essay. Then write a short critical note on Oliver Goldsmith's national prejudices. So again, describe the term national prejudices, क्या मतलब होता है, explanation essay के बेस पे बताना है. What is Goldsmith's view regarding national prejudices, क्या है उनका व्यू, क्या वो कहते हैं, पेट्रियाटिज्म क्या है उनके लिए, ऐसे कैसे अपील करता है रीडर्स को, क्या अपील क्या करता है, अपील ये करता है कि वी शुड बी सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड नॉट बी सिटीजन्स ऑफ आवर ओन कंट्रीज. बिफोर बीइंग इंग्लिशमैन और इंडियंस और रशियंस और अमेरिकन्स, वी शुड बी citizens of the world first, we should be global citizens first. That is what he appeals in the essay. तो ये सब लिखना है. फिर write a note on the central theme of Virginia Woolf's professions for women. So उसमें historical context पहले बताना पड़ेगा कि स्पीच कहाँ पे हुई, किसके अकॉर्डिंग्स में स्पीच दी गई, what are the main arguments of the essay, क्या उसमें वो कहती हैं, क्या आइडियाज़ को डिस्कस करती हैं, क्या स्ट्रगल्स उनको एज अ फीमेल राइटर फेस करना पड़ा वर्जीनिया वुल्फ को, जो वो डिस्कस करती हैं इस एसे में बेसिकली. एंड व्हाट अपील डज शी मेक टू यंग वुमेन, क्या उन्हें करना चाहिए, दे शुड बी एक्सप्रेसिव अबाउट देयर सेल्व्स एंड ऑल दैट. एंड देन डिस्कस हर एज अ राइटर. सेंट्रल थीम्स बेसिकली उस पर क्वेश्चन हो सकता है. एंड देन फाइनली इन द लास्ट यूनिट यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक write a letter that can be of different types. It can be formal, informal letters, so you know how to write them. Letter of inquiry, when you need to ask something from someone, get an information. Grievance redressal, when you have been wronged in some way,
आपको अनफेयर ट्रीटमेंट किसी ने किया है तो आप किसी हायर अथॉरिटी से उसको लेटर लिख के उसके लिए एक्शन डिमांड करें, वो हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट. सो वट एवर क्वेश्चन कम्स यू कैन be asked to write a letter, and these are the different types of questions that you can expect in the subjective pattern. So prepare accordingly. Good luck.